हेलो एवरीवन। हमें काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस है कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाओ। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि ये टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो उसमें से हम चैप्टर वाइज जाएंगे। इसके लिए मैं नोट्स की हेल्प लूँगा कि कौन से टॉपिक में एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में एसएक्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक में से एलएक्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके पास अगर नोट्स होंगे तो उसमें आप एडिशनल पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक होंगी, तो हर एक चैप्टर के आगे में एक पेज पेस्ट करो और उस पर आप लिखते जाओ कि इसमें से कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एसएक्यू के लिए, और कौन से एलएक्यूज है जो प्रिफरेंस वाइज हमको पढ़ने हैं। तो वन बाय वन हम जाते जाएंगे। सो स्टार्टिंग विद द सेल मेम्ब्रेन कॉम्पिटेंसी 1.1 बायोकेमिस्ट्री 1.1। तो ये टॉपिक में फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देन एसएक्यू में दो इंपॉर्टेंट एसएक्यूज है, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन और दूसरा इंपॉर्टेंट एसएक्यू है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये एलएक्यू करके भी आ सकता है। एमसीक्यू के लिए यहाँ पे दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मार्कर एंजाइम्स फॉर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस। फॉर एग्जांपल जैसे लाइसोसोम्स है, द मार्कर एंजाइम इज कैथेप्सिन। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यू के लिए, दैट इज ज़ेल्वेगर सिंड्रोम, दैट इज पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। ये दो जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन में से ये जो मैंने अभी टॉपिक बोले हैं ये हमको प्रायोरिटी वाइज या प्रेफरेंस वाइज हमको पढ़ने हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंजाइम। एमसीआई कॉम्पिटेंसी 2.1 टू 2.7। इसमें से डायग्राम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है। देन एमसीक्यू के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? व्हाट हैपन्स टू वीमैक्स एंड केएम वैल्यू इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर. Also the diagnostic uses of various enzymes. For example, in pancreatitis there is raise amylase and lipase level, but lipase is more specific for the diagnosis of pancreatitis. For example, CKMB is the earliest enzymatic marker to rise in the myocardial infarction. So ये टॉपिक में से MCQ आएंगे. शॉर्ट नोट्स कौन से इंपॉर्टेंट है? आइसो एंजाइम्स विद देयर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कोएंजाइम्स, इट्स टाइप्स, देन cardiac marker, enzyme pattern in the liver disorders. These are the important SAQs from this chapter. And the important LAQs are definition and classification of enzyme with example. This is the very very important LAQ, followed by the enzyme inhibition. This is very very important LAQ, as well as short note between the difference between competitive and non-competitive inhibition. The other LAQs from this topic are mechanism of enzyme action, factors affecting enzyme activity, then diagnostic importance. हमने MCQ में already बोला, तो diagnostic importance is also a very very important LAQ after the classification. So classification priority wise on the first number, followed by the diagnostic importance of the enzyme, and third number is the enzyme inhibition. These are the very very important LAQs from this topic. अदर LAQs आर रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. इसमें से भी जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है वो SAQ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एंड द 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल केसेस फ्रॉम दिस चैप्टर आर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, raised CKMB level, chest pain and ECG changes, myocardial infarction. Then second one is the hepatic jaundice, third one is the obstructive jaundice, and fourth one is the acute pancreatitis. Raise amylase level, raise lipase level, pain in the acute pain in the abdomen, pancreatitis. हेपेटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. हेपेटिक में दोनों टाइप के बिलिरुबिन बढ़े रहेंगे, SGOT, SGPT दोनों एंजाइम्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा. और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में अल्कलाइन फॉस्फेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, OTPT स्लाइटली बढ़ा रहेगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा. इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल या थोड़ा सा बढ़ा रहेगा. ठीक है. दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट केसेस फ्रॉम दिस टॉपिक एंजाइम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक is the carbohydrate chemistry and metabolism. कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स,
और ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, which enzyme is deficient in Hurler and Hunter syndrome, it is very very important. Okay, and general features of mucopolysaccharidosis, this is important from this chapter. Glycosaminoglycans. Then enumerate type of questions BAQs में enumerate homopolysaccharides, enumerate heteropolysaccharides, enumerate monosaccharides like questions can be asked. Then glycemic index is the important SAQ from this chapter, and dietary fibers with their clinical role or clinical significance is important from this chapter. In MCQ part, glycosaminoglycan is important, and the EP-mer part, EP-mer anomalous, this part is very very important for MCQs from the carbohydrate chemistry. From the carbohydrate metabolism, the most important LAQ is regulation of blood glucose level. Regulation of blood glucose level, followed by glycogen metabolism, followed by gluconeogenesis. The important short note from this chapter is HMP shunt, glycolysis, RL cycle. These are the important SAQs. HMP shunt, RL cycle, and glycolysis. These are the important SAQs. Important clinical cases: diabetic ketoacidosis, diabetes mellitus, galactosemia, von Gog's disease, McArdle's disease, lactose intolerance. These are the important clinical cases from this chapter. आपको सबको ये नोट डाउन करना है. हर चैप्टर के पहले आपको नोट डाउन करना है. अगर नोट्स है तो नोट्स में भी थोड़ा बहुत ऐड करो. अगर बुक में लिख रहे हो तो बुक के फ्रंट मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में एक पेज पेस्ट करके वहाँ पे नोट डाउन करो. ये आपको अभी नोट डाउन करना है दोनों बैचेस के लिए. अगर फ्रेशर बैच है तो ओरिएंटेशन आने के लिए नोट डाउन करो, और द एग्जाम गोइंग बैच है तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट डाउन करो. ठीक है. तो ग्लाइकोलिसिस हमने बोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. टैपापोर्ट लुबरिंग साइकिल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट. देन gluconeogenesis important LAQ. 4 substrate of gluconeogenesis important BAQ, brief answer question. Glycogen metabolism important LAQ. Regulation of glycogen metabolism is very very important. All glycogen storage disorders with defective enzyme and the pattern, clinical pattern, it is very very important for MCQ. जो टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपको हार्ड लगता है वो MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. ठीक है. HMP shunt, very very important SAQ. Galactosemia, very very important clinical case. Congenital cataract, hypoglycemia, mental retardation. Galactosemia. Galactose 1-phosphate uridyl transferase deficiency. Galactosemia. Okay. Diabetic ketoacidosis, very very important case with metabolic acidosis. Raised ketone bodies level, raised acid level, metabolic acidosis. The detection of ketone bodies in urine by Rothera's test, and detection of sugar in urine by Benedict test. So these are the key points. Now coming to the metabolism and chemistry and metabolism of lipids. The important topics are phospholipids, essential fatty acids. These are the important SAQs. Phospholipids, essential fatty acid from the chemistry. Okay. Important clinical case from the chemistry is respiratory distress syndrome. Respiratory distress syndrome. Okay. Then lipoproteins and its characteristic, important for MCQ and SAQ. Lipoprotein with characteristics, important for MCQ, very very important. Must read for MCQ and must read for SAQ. Lipoproteins. Okay. Then prostaglandins with their role. Prostaglandin, their names and their role. And this part, chemistry part, these are very very important BAQs, brief answer questions. Enumerate phospholipids, enumerate essential fatty acids, enumerate omega-3, omega-6 fatty acids, then enumerate prostaglandins with their role, enumerate lipoproteins. These are the BAQs from this chapter. The important diagram from this chapter is lipoprotein, chylomicron.
the diagram lipoprotein, it is very very important disorders for MCQ, hyperlipoproteinemias in the metabolism part, hyperlipoproteinemias. The most important LAQ from this chapter is the beta oxidation of fatty acid followed by ketone body metabolism. Which two? Beta oxidation of fatty acid followed by ketone body metabolism, then fatty acid synthesis, then cholesterol metabolism. Okay, these are the four important LAQs we'll discuss in the metabolism. So phospholipid, it is SAQ, essential fatty acid, omega-6 series, omega-3 series, omega-9 series. This is very very important. Then prostaglandins and its role, diagram of lipoprotein, types of lipoproteins and their characteristics and their function. For the MCQ part, for the university examination, it is very very important, lipoproteins. For example, this VLDL and chylomicron, they are responsible for transport of triacylglycerol. LDL, HDL, they are responsible for transport of cholesterol. Okay, so exogenous TG, it is chylomicron, endogenous TG, it is VLDL. From liver to peripheral tissue, it is LDL. From peripheral tissues to the liver, reverse transport, it is HDL. Okay. So metabolism of lipid, beta oxidation, ketone body synthesis and utilization, fatty acid synthesis and cholesterol metabolism. These are the important LAQs. Important clinical cases, it mainly includes the disorders of lipoprotein metabolism in the metabolism of lipids, then atherosclerosis, fatty liver. These are the important clinical cases from this chapter. Okay, important short note is fatty acid synthase complex, fatty acid synthase complex. Okay, अभी इसमें से MCQs कहाँ पे है? तो disorders of beta oxidation, that is Rebsom's disease. Okay, then Jamaican vomiting sickness, SIDS, Zellweger is also here. So these are the MCQ, important MCQ part. Fatty acid synthesis, important LAQ. Cholesterol synthesis degradation, important LAQ. Product given by the cholesterol, important BAQ, brief answer question. Okay. Ketone bodies name, their utilization and their synthesis. Okay, and why liver can't utilize ketone body. This is important. Okay, Rothra's test for the diagnosis of ketone bodies in the urine. Lipoprotein, it is very hard to remember the lipoprotein and their metabolism, but it is very very important topic. Lipoprotein, must read topic, lipoprotein metabolism. Okay, for MCQ part, for the clinical case and for the LAQ, SAQ, all. It is very very important. Lipoprotein, their characteristic, their metabolism and their disorders. Okay, for entrance examination, it is must read question, lipoprotein with its metabolism. Okay, so fatty liver and atherosclerosis, these are the important clinical cases, also short note. So this is the marking for lipid chemistry and metabolism. Coming to the amino acid chemistry and metabolism. From the chemistry, the most important LAQ is structural organization of protein, primary, secondary, tertiary and quaternary. Okay, and for MCQ part, the classification of amino acid, metabolic classification, then nutritional classification, then based on their structure and based on their metabolic fate. The classification of amino acid is important for MCQs. The structural classification of protein, primary, secondary, tertiary and quaternary, it is important for LAQ. And diagram, specifically the alpha helix and beta pleated sheet. The diagram of these two are very very important. Okay, then biologically important peptides, their names also important. BAQ, biologically important peptides, glutathione, okay, oxytocin, vasopressin, this is very very important. Immunoglobulin diagram, so कितने डायग्राम बताया मैंने यहाँ पे अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में? बीटा अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट and immunoglobulin diagram. Then plasma protein, electrophoresis pattern, plasma protein. These four diagrams are very important, very very important from the chemistry part. Okay.
And then plasma protein related the questions: multiple myeloma, cirrhosis of liver, nephrotic syndrome, electrophoretic pattern in multiple myeloma, cirrhosis of liver and nephrotic syndrome. Okay. Biologically important peptide, short note. In the protein metabolism, the most important LQ is ammonia metabolism and urea cycle. Okay, transport of ammonia is the important part for MCQ in the form of alanine in the form of glutamine. Okay, it is very important MCQ. Most important LQ, ammonia metabolism and urea cycle. Diagram to remember from this chapter is the urea cycle. It is very important, urea cycle, with its enzymes, regulatory enzymes and disorders. So urea cycle, it is very important, must read question from this chapter. Then another LQs from this chapter includes the phenylalanine and tyrosine metabolism, then glycine metabolism, and then metabolism of sulfur containing amino acid. Okay, कौन से बताया मैंने? Phenylalanine and tyrosine metabolism, glycine and sulfur containing amino acid. Okay, but the most important disorders from this the topic, the first one is the phenylketonuria, then alkaptonuria, then homocystinuria, maple syrup urine disease and urea cycle disorders. These are the important clinical cases from this chapter. Okay, so what is left? SAQs: transamination reaction, transmethylation reaction. These are the important SAQs from this chapter. Diagram of the urea cycle. Okay. Metabolism and starvation, integration of metabolism and starvation. Important short note: integration of all three metabolism, how they combine to form acetyl coenzyme A and how then acetyl coenzyme is utilized and how they are interconnected with each other. Integration of metabolism and metabolism of starvation is the important SAQ, must read SAQ. Metabolism in starvation. Okay, well-fed state, early fasting, starvation. It is very important. Okay. Biological oxidation. The most important diagram is the chemiosmotic hypothesis. Chemiosmotic hypothesis. Okay, this is the very important diagram from this chapter. The important LQ is electron transport chain, and important SAQ is oxidative phosphorylation. And important part in MCQ is different inhibitor of complex 1, complex 2, complex 3, complex 4, and inhibitors of oxidative phosphorylation. These are the MCQ part, very important for MCQ, must read for MCQ. And uncouplers, it is also very important topic. So this is all about the electron transport chain and oxidative phosphorylation. Nucleotide chemistry and metabolism. The important question is pyrimidine metabolism. Important LQ from this chapter is pyrimidine metabolism. Purine nucleotide synthesis, it is very difficult to remember. So it is very rare question. Means if you compare the purine and pyrimidine, the pyrimidine is the which you should give the preference to pyrimidine first, followed by the purine nucleotide synthesis. And the most important SAQ from this chapter is the purine salvage pathway. It is purine salvage pathway. And important, if I want to ask something from this chapter, म्हणजे मेरे को कुछ पूछना है ये चैप्टर में से, तो मैं गाउट पूछूंगा या लेशनिहान पूछूंगा. ठीक है, मतलब ये क्लिनिकल केस में कवर अप करूंगा मैं ये चैप्टर, गाउट या लेशनिहान सिंड्रोम. Important SAQ is purine salvage pathway. Important LAQ is pyrimidine metabolism. Okay, so three cases are important from this chapter: gout, leishmanian and orotic aciduria. Gout, leishmanian and orotic aciduria. Okay,
केमिस्ट्री पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स, डोंट कंफ्यूज इट विथ पेप्टाइड्स. Biologically important disaccharides are also there, lactose, maltose, sucrose. Biologically important peptides are there, glutathione, oxytocin, vasopressin, and biologically important nucleotides, that includes the nucleotides, ATP, ADP, AMP, and so on. So this is important question, biologically important nucleotide. Then synthetic nucleotide analogs which are used in the treatment of cancer, so they are also important. Okay, the important source for MCQ is the sources of purine and pyrimidine ring, sources of carbon and nitrogen in purine and pyrimidine ring. This is important part for the MCQ, specifically this one, C4, C5 and N7, it is given by the glycine. C4, C5 and N7 of the purine ring, it is given by the glycine, and N3, N9, it is given by the glutamine. Purine salvage pathway, important SEQ. The disorder related with this pathway is the Leishman syndrome, HGPRTase deficiency. Okay, gout, obviously हर अल्टरनेट ईयर गाउट पे क्वेश्चन रहता है. इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल. यूरिक एसिड लेवल और एक जगह पे बढ़ता है, दैट इज वोन गर्ग्स डिसीज. अभी क्यों बढ़ता है ये आप देख लो. वोन गर्ग्स डिसीज, डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. Then pyrimidine ring, this is MCQ part, the sources of carbon and nitrogen. So N1, C4, C5 and C6, it is given by aspartate. N1, C4, C5, C6, it is given by the aspartate. N3 from glutamine and CO2, C2 from CO2. Okay. Pyrimidine metabolism, it is important. LAQ, the disorder related with this pathway is the orotic aciduria. Now the important topic for clinical cases, very very important topic for clinical cases, hemoglobin chemistry and metabolism. Sickle cell anemia, thalassemia, molecular basis of sickle cell anemia, diagram, the diagram is, the polymerization diagram is very very important. Then thalassemia, types of thalassemias, that important clinical features are important. So these two disorders are very very important, followed by the porphyrias and the jaundice. Obviously jaundice on the top priority, jaundice followed by sickle cell anemia, thalassemia and then the porphyrias. तीनों टाइप के jaundice important है, सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है, थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है, पॉर्फायरिया में एक्यूट इंटरमिटेंट पॉर्फायरिया एंड पॉर्फायरिया कुटेनिया टार्डा, ये दो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इनके एंजाइम डिफेक्ट है जो एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो देखो क्लिनिकल केसेस में क्या क्या लिखा है. एक्यूट इंटरमिटेंट पॉर्फायरिया, पॉर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, कंजेनाइटल इरिथ्रोपोइटिक पॉर्फायरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, जॉन्डिस एंड नियोनाटल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. टिपिकल फीचर, द येलोइश डिस्कलरेशन ऑन थर्ड डे आफ्टर द बर्थ, neonatal physiological jaundice. Phototherapy is given. Basic of phototherapy, you should know the basic of phototherapy, क्यों देते हैं. ठीक है. So heme synthesis pathway is the important LAQ, but it is mainly related with porphyria, that's why it is very very important. So MCQ, the deficient enzymes can be asked. The bilirubin metabolism, jaundice is very very important. Sickle cell anemia, SAQ and clinical case, the diagram of polymerization is important. Then classification of thalassemia is important. So this is all about the heme synthesis and metabolism. Now coming to the vitamins. Vitamins, it is must read topic for entrance examination, it is must read for clinical cases, it is must read for MCQs. इसमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी and vitamin B12 and folic acid, these are LAQs. Vitamin A, vitamin D, then vitamin C and vitamin B9 means folic acid and B12, these are the LAQs. Okay, and rest of the vitamins, these are mainly asked as a clinical questions. Okay, clinical cases. So what are the different cases from this topic? Night blindness, Bitot spot, xerophthalmia means related with vitamin A. Rickets, osteomalacia means vitamin D. Bleeding disorders means vitamin K deficiency. Scurvy, vitamin C.
beriberi, B1 thiamine deficiency, pellagra niacin deficiency, megaloblastic anemia. It may be due to folic acid and B12 deficiency. Then Wernicke-Korsakoff syndrome. It is related with the thiamine. So these are the different disorders related with this chapter. And it is very, very important. Biochemical functions. You should remember the biochemical function. You should make a chart of RDA. Okay, vitamin wise RDA, their biochemical functions and deficiency manifestations. So you should display the chart vitamins. विटामिन्स कैसे पढ़ने के? विटामिन्स जैसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं B12 पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद आनी चाहिए कि B12 में दो रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मिथिल मैलोनिल कोए म्यूटेज रिएक्शन एंड सेकंड इज द मिथ्योनिन सिंथेज रिएक्शन. फॉर दिस टू रिएक्शन B12 इज रिक्वायर्ड. सो दिस इज बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ B12. फोलिक एसिड अगर याद आया तो फोलिक एसिड में मुझे ये याद आना चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में काम में आता है, तो इसलिए ये इरिथ्रोसाइट के मैचुरेशन में काम में आता है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में काम में आता है, इसलिए ये इरिथ्रोसाइट मैचुरेशन में काम में आता है. ठीक है, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ फार्मिमिनोग्लूटामिक एसिड. हिस्टिडिन लोड टेस्ट. Histidine load test is important in the folic acid. Okay, then folate trap, it is important. It is related with B12. Okay, B12 deficiency also causes the folate deficiency. In this way you can remember the vitamins. Okay, जैसे अभी hydroxylation reaction, vitamin C. Okay, NAD related reaction, NAD NADP means niacin. Thymine pyrophosphate, it is related with the B1. Pyridoxal phosphate, transamination reaction, transulfuration, decarboxylation reaction, it is related with PLP, pyridoxal phosphate, B6. Okay. So see, these are the 5 important reactions catalyzed by the folic acid. So you should know there are 5 reactions. You should know the number 5. So what are the 5 reactions? Conversion of homocysteine to methionine, then conversion of UMP to TMP, then in the purine synthesis it is important. Then glycine is converted into serine and histidine is converted into FIGLU with the help of this folic acid. 1 carbon metabolism, it is important in 1 carbon metabolism. Conversion of glycine into serine. Okay, then glycinamide ribosyl 5-phosphate means formation of C8 of the purine. It is very, very important. Means it is important for nucleotide synthesis, RBC maturation. Okay, B12 2 reactions. Okay, methyl malonyl CoA mutase and methionine synthase. Minerals. LAQ is related with means important LAQs from the calcium, iron. Calcium and iron is the important LAQ. Okay, calcium and iron. Okay, for the short note, the important one is the zinc and copper. Important clinical cases includes iron deficiency anemia, tetany carpopedal spasm in calcium deficiency, acrodermatitis enteropathica skin rash on the acral parts of the body, Wilson's disease and Menkes disease, it is related with the copper. Fluorosis, fluoride, excess fluoride consumption. Okay, and iodine deficiency, goiter, specifically pregnant female, affect the pregnant female. And enlargement of thyroid gland, swelling in the front region of the neck with deranged thyroid status. Okay, so these are the important clinical cases from this chapter. Major elements, minor elements. Major elements, calcium, phosphorus, sodium, potassium, chloride, magnesium. Minor elements mainly include the iron, zinc, copper, iodine, fluoride, selenium, molybdenum. Okay, MCQ part, this is very, very important for MCQ part. So you should know the selenium related enzymes. You should know the molybdenum related enzymes. Okay, these are very, very important. Xanthine oxidase related with molybdenum. Zinc, carbonic anhydrase and the superoxide dismutase, it is very important for zinc. Okay, so lot of MCQs are there from this topic.
Then nutrition. The important clinical cases, kwashiorkor, marasmus. These are the important clinical cases. Then the SAQs, basal metabolic rate, specific dynamic action, balanced diet, and calorific value of food. These are the important SAQs from this chapter. Marasmus, kwashiorkor, very, very important. BMR and factors affecting it, very, very important. फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यू कैन राइट डाउन द सीरम पैरामीटर। आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है इसका, यूरिया का सब पता है आपको, कौन से कंडीशन में यूरिया बढ़ता, कौन से कंडीशन में क्रिएटिनिन बढ़ता है ना। यूरिया, क्रिएट, सोडियम, पोटेशियम के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखोगे और क्लियरेंस टेस्ट का भी लिखोगे तो केएफटी कवर हो जाता। एलएफटी में हिपेटिक जॉन्डिस, हिपोलिटिक जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में लिखोगे तो बहुत सारा पैरामीटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स कवर हो जाते। बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट, इस पे कमेंट करोगे तो एलएफटी कवर हो जाता है पूरा। थायराइड में तो 3 ही हार्मोन है, T3, T4, TSH, उस पर कमेंट करना है हमको, है ना। अगर कम से कम फ्लो चार्ट तो बना के रखो, ये 3 इसके अगर फ्लो चार्ट बनाए तो ये भी कवर हो, मतलब इजी जाएगा आपको, ठीक। दीज आर इम्पोर्टेंट SAQs। एसिड बेस बैलेंस, मस्ट रीड LAQ। एसिड बेस बैलेंस, 4 डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस विद देयर कॉजेस एंड द डिफरेंट सिस्टम्स इन अवर बॉडी। फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ब्लड वेपर, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, किडनी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट LAQ, इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल। ये छोटा टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस पे अगर LAQ आया तो अपना पूरा बैंड बच जाता अगर हमने ये छोड़ा है तो, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, सेम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। मॉलिकुलर बायोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज protein biosynthesis, means translation in eukaryote. This is very very important LAQ from molecular biology. Second important LAQ is recombinant DNA technology and its applications. Applications in medicine, plants में नहीं लिखना है, BT कॉटन वगैरह नहीं लिखना है, applications in medicine, okay. So recombinant DNA technology and its applications in the medicine. So these are the important questions. SAQs mainly includes the various types of RNAs, tRNA. The diagram important is Watson and Crick model of DNA and tRNA. Structure of tRNA, it is very very important. Then post-transcriptional modifications, post-translational modification, and the various inhibitors of transcription, translation and replication. This is MCQ part. ये आपने स्पेसिफिक MCQ के लिए करो। इनिबिटर्स ऑफ रिप्लिकेशन, इनिबिटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इनिबिटर्स ऑफ ट्रांसलेशन। प्यूरोमाइसिन बहुत प्रयोग कर, इनिबिटर ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इंपॉर्टेंट MCQ है ना। तो ये तीनों इसके इनिबिटर्स जो है वो MCQ के लिए करो। SAQ के शॉर्ट नोट के लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मतलब RNA में क्या चेंजेस होते हैं सिंथेसिस के बाद वो, और ट्रांसलेशनल मतलब प्रोटीन में बनने के बाद पेप्टाइड में क्या चेंजेस होते हैं वो, ये SAQ है। LAQ में DNA रिप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एंड तीसरा ट्रांसलेशन। इसमें से ट्रांसलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग एक दूसरा LAQ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन शॉर्ट नोट में डायग्राम्स में tRNA के डायग्राम, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA के डायग्राम एक इम्पोर्टेंट है। फिर MCQ पार्ट में DNA रिपेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली द pyrimidine dimer, that is pyrimidine dimer formation in xeroderma pigmentosum, nucleotide excision defect, nucleotide excision repair defect. So MCQ जो पार्ट है वो रिपेयर में से आएगा और जो एंजाइम्स है DNA रिप्लिकेशन के उसमें से आएगा, ठीक है। Two very very important LAQs, that is protein biosynthesis and recombinant DNA technology. Just I am reading the SAQs from this topic. tRNA structure, Watson and Crick model of DNA, telomere and telomerase, then post-transcriptional modifications, post-translational modifications, inhibitors of protein synthesis, regulation of gene expression. This is very very important. Don't skip this topic. Must read. Lacoperon.
lac operon and regulation of gene expression in prokaryotes. Okay, genetic code, must read genetic code, very very important SEQ, genetic code. Okay, डायग्राम में रिप्लिकेशन की डायग्राम, वाटसन एंड क्रिक मॉडल की डायग्राम, टीआरएनए की डायग्राम, repair mechanism, it is specifically for MCQs. Genetic code is the very very important SEQ from this topic. Recombinant DNA technology is the important LAQ. Polymerase chain reaction PCR, अभी कोविड आया, RT-PCR, PCR is very very important. Okay, so PCR, steps of the PCR, its uses and how it is effective in the diagnosis of COVID, it is very important. Okay, free radical short note, antioxidant important short note. Phase 1 reactions of the biotransformation or phase 1 reactions of the detoxification and phase 2 conjugation reactions, these are the important short notes. कैंसर में ट्यूमर मार्कर्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. ट्यूमर मार्कर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट SEQ. Okay, and the second important is the oncogenes. It is important, oncogenes and tumor suppressor gene, it is important for MCQ. Tumor marker is the important SEQ from this chapter. The extracellular matrix, collagen, disorders related with collagen, elastin, disorders related with elastin, very very important for MCQ part. Collagen short note, important short note. Okay, mechanism of hormone action, the mechanism of action of group 1 hormone, steroid hormone, it is very very important LAQ. It is very very important LAQ. So इसका अगर हम आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, मैकेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यू कैन राइट डाउन द एनी SAQ और LAQ फ्रॉम दिस चैप्टर. जस्ट क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ो उसका, और डायग्राम्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस. क्रोमेटोग्राफी में डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस में डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस. ओके, डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस. QC, क्वालिटी कंट्रोल में क्या पढ़ना है? डेफिनेशन, इन शॉर्ट, टाइप्स, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, डिफरेंट रूल्स रिलेटेड विद द क्वालिटी कंट्रोल. ओके, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, यहाँ तक आप पहुँचोगे तो समझ लेना आपकी पढ़ाई बहुत हो चुकी है. और एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड एनालाइजर इन बायोकेमिस्ट्री, ये दो तीन लाइन के आपने थोड़े से पढ़ के रखे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको. ठीक है, तो ये सब आपको नोट डाउन करना है, ये सब आपको पढ़ना है, ये सब आपको रिवाइज करना है. मैंने अपने तरफ से ट्राई किया है ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ने में या प्रीफरेंस लिस्ट या प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प हो. ठीक है, तो आप इस हिसाब से प्रिपेयर करो, आपको ज़रूर हेल्प होगी. थैंक यू.